Well, hi there. Very warm welcome. You're watching the Election Premier League here on Times Now's Blueprint Explosive Exclusive with me, Meghna Dekha. Live visuals. Let's take you across. You can see Prime Minister Modi's roadshow, which he's holding at Jaipur. In fact, this is Rajasthan's poll battle. Of course, it's just merely few days away, 3 days left in campaigning. Tomorrow is going to be the penultimate day and 5 days away from polling. And of course, leading BJP's poll blitz, as you can see on your screens, is none other than the man himself. Prime Minister Modi has been holding a 4-kilometer roadshow in Jaipur. Remember, earlier in the day, he's also held 3 different rallies. Now, in this roadshow that you can see on your screens, he is going to be passing through Sanganeri Gate as well as Choti Chopar and Tripolia Bazaar, as well as Badi Chopar and the Johri Bazaar. In fact, Prime Minister's chariot is going to be covering areas that witness communal tension in the past as well. This is the significance of where he is going to be moving through. In fact, his roadshow has been expected to have an impact on 8 assembly seats in the state. In fact, first, let's get you this report which has been filed from Jaipur, where people have been waiting with bated breath to catch a glimpse of Prime Minister Modi. ढोल नगाड़े और मोदी मोदी के साथ जयपुर के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी हाँ, देखिए जबरदस्त उत्साह के साथ सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए जो ढोल बज रहा है और लोग जो है जबरदस्त उत्साह में आपको दिखेंगे। और ये जो इलाका है पूरा 4 किलोमीटर का इलाका है और मैं दिखाऊंगा कि आप एक बार पीछे दिखाइए। पूरा ये 4 किलोमीटर का इलाका है और ये पूरा वही इलाका है जहां पर 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत हनुमान मंदिर से करेंगे, लेकिन जबरदस्त उत्साह है। ये 3 विधानसभा आदर्श नगर, हवा महल और किशनपोल विधानसभा को कवर करेंगे और तीनों विधानसभा क्षेत्र है वो फिलहाल कांग्रेस के पास है। तो जबरदस्त उत्साह और आपको दिखाऊंगा उस तरफ में, अपने कैमरामैन से कहूंगा मोहन से कि देखिए उस तरफ देखिए, वहां पर ढोल बजाते हुए हैं तमाम लोग और वो जश्न के मूड में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, देश के प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री आने वाले हैं। और ये वही इलाका है जहां पर जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था और लगभग जो इनका रोड शो गुजरेगा करीब 4 किलोमीटर का, वो वही इलाके होंगे जहां पर बम धमाके हुए थे। और इसलिए खास तैयारी है और इस खास तैयारी के लिए आप देखिए 6 बजे आने हैं प्रधानमंत्री मोदी को लगभग, और अभी से ही जबरदस्त उत्साह के साथ लोग यहाँ पर हैं। मैं पूछूंगा किस तरह का क्या तैयारी, किस तरह से स्वागत करने वाले हैं। हम बड़े जोश खरोश से स्वागत करने वाले हैं और राजस्थान में जिता के भेजेंगे बातों को। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए राजस्थान में फिर से हम उनको लाएंगे, राजस्थान में अपनी बार Well, in fact, let's go across to Amit Kumar, who's joining us, as well as Gajraj. Gajraj, I'm going to come to you first. We can see the kind of enthusiasm that the Prime Minister has managed to strum up, but it's also very significant, the fact that he's holding a roadshow in one of the areas, in some of these areas where there were riots a few months back. The significance of this. Yes, the significance of this area is particularly very high in this state of Rajasthan, because recently a small riot, was fueled. One person was, killed after a motorcycle clash took place, and this is the particular area where, serious blast, shook Rajasthan in 2008, and right now I am standing with a lot of crowd here. Keep walking, you keep talking about Modi, because you can see the sea of supporters right behind me here, and lakhs of people have taken the streets here. They are coming directly from Bikaner. Modi road. Arriving right now. Well, we are going to go across to Gajraj and try and get in a word from him. There seems to be a bit of a problem there with the audio signal. But then remember, the significance of this, because Prime Minister's blitzkrieg today, remember, he has held 3 rallies as well as 1 roadshow that he is taking the entire capital city by storm. The pink city, the Jaipur, is where the Prime Minister is holding the roadshow even as we speak. The significance of this is very important, because remember, the BJP is hoping that this time around it can hope to it is going to return to power. Remember, Rajasthan has a record of having alternate
parties in power, once the BJP and then the Congress. So it is, of course, the Congress which is in power now. The BJP is hoping to wrest that advantage away from the Congress party and establish a BJP government here. Of course, the Prime Minister has concentrated on what he calls the graft charges against the Congress party. He has also hit out when it comes to the caste card that the Congress party has been playing. Remember, today Congress's manifesto was released, and one of the foremost promises that it had made was that it is going to do a caste survey. The Prime Minister, however, has reminded that there have been several atrocities on Dalits under Congress's Sarkar. He's also targeted Ashok Gehlot for the kind of graft which has happened on his watch, as well as women's safety, something that the Prime Minister has highlighted. Let me go across to Gajraj, who is joining us. Gajraj, if I can ask you about the kind of support that the Prime Minister seems to have strung up for his party in the penultimate fight for BJP when it comes to the state of Rajasthan. We'll try and reconnect it with Gajrat and get you more details on that. There seems to be a bit of a problem still with his audio. But then remember, it's very important for us to point out that the fact that the Prime Minister is covering some of these key areas which have seen a lot of violence in the past, and it's significant that he has decided that when he has his roadshow across the pink city of Jaipur, that he is going to be touching upon areas where there have been riots in the past as well under Congress's regime. That is something that the Prime Minister has highlighted in his previous roadshows and rallies as well, especially today when he said that the Congress has only given riots, even riots which happened on festivals such as Holi and Hanuman Jayanti. We are going to be getting you more details from Ground Zero in Jaipur, but after a short break. Don't go anywhere. Well, let's get you these visuals coming in live from Jaipur. This is where the Prime Minister is holding a rally, and this is a very significant roadshow because, as we were explaining to you, remember there are only 3 days. Today is the third day which is left for campaigning, and after that only 5 more days we are going to have polling in the state of Rajasthan. It's very significant because the BJP is hoping that they can wrest power from the Congress party, which is held by Ashok Gehlot in the state. And this roadshow itself is very significant. Let's tell you why. Because it is going to be as long as 4.5 kilometers, being held by none other than the Prime Minister Modi himself. But the region, the selection of this region is very significant. These are the areas, many of which have witnessed communal tension in the past, especially under the Congress Sarkar. Also in 2008, some of these areas had seen Jaipur serial blasts, which happened along this very route that the Prime Minister today is taking. Now, this roadshow also significantly is going to be covering 4 minority-dominated seats as well, and the direct impact of the roadshow is expected to be on 8 assembly seats of Rajasthan. Now, this is also significantly going to be stopping at 3 of the temples in the minority-dominated area. So, the Prime Minister being there, holding a roadshow in this area is extremely crucial for BJP's campaign. He is the one who has helmed it. Remember, BJP has not announced a chief ministerial face, which is why it is the charisma of Modi which they are banking upon. This entire roadshow that he is holding today for 4.5 kilometers is going to be passing some of these key areas, and Prime Minister will be targeting as many as 8 assembly seats, and 3 of the temples are also there in the minority dominated areas. So let me go across to Gajraj. Gajraj, give us a sense of the mood on the ground. Recorded, है ना? जानकार है, रुक गए। Gajraj, if you can hear me. Hello. Am I audible? Yes, we can hear you now finally. Go ahead, Gajraj.
Yes, you can see the support of crowd here. You can see this little girl showering. She's still showering petals on us. As the carcade of Prime Minister Modi has just passed this particular area, we'll speak to a few of the people here. कैसा सपोर्ट देखते हैं सर प्रधानमंत्री जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सपोर्ट है। प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरा जयपुर वर्ल्ड सिटी जो है जाम हो चुकी है, दुकानें जो है लोगों ने अभी तक बंद नहीं करी है, हालांकि कस्टमर्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है मोदी का पावर है सर, ये मोदी का पावर है। मोदी पूरा पूरा जयपुर भगवा, हर हर मोदी, घर घर मोदी है, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री जी जो सभाएं कर रहे हैं, जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है, क्या रिस्पांस रहेगा इस बार? सब 100% बीजेपी सरकार, 100%, 101% जीत है, 100%। This is the enthusiasm right now after we came from Bikaner. Right now we are in Jaipur and you can see the enthusiasm right around me. Pradhan Modi has just passed, but now people still have that particular zeal right now here in the world city. I am standing right between these people. These are the voters. 3 constituencies this particular area covers. This is Kishanpol, Hawa Mahal and Adarsh Nagar area right now jammed up by the supporters of Pradhan Mantri Narendra Modi. Studio. Well, these are the loud chants of Modi, Modi, which have gone up. But the significance, I was asking you earlier, Gajraj, the significance of these areas that the Prime Minister is going to be walking across. Let me also get in a sense of Amit Kumar, who's also joining us. Amit, आप ये बताइए कि वहाँ का माहौल कैसा है? ये बहुत ही significant area है जहाँ पर Prime Minister जी जा रहे हैं. यहाँ पर पहले riots भी हुए थे. जयपुर serial bus भी along this line हुआ था और इसमें minority seats को भी cover कर रहे हैं. अमित, आपको आवाज आ रही है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाला इलाका है, ये परकोटा का इलाका है और यहाँ पर अगर आप देखिए, परकोटा मतलब होता है जो दीवारों से घिरा होता है, इसमें 7 दरवाजे हैं और ये यहाँ पर अगर आप देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। यहाँ पर देखिए महिलाएं हैं बड़ी संख्या में जो इंतजार कर रही हैं, ये महिलाएं आए हुए हैं। ये महिलाएं भी आप लोग प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, इंतजार कर रहे हैं भैया। कैसे स्वागत करने वाले हैं आप लोग? बहुत बढ़िया स्वागत हो रहा है। जबरदस्त उत्साह है और ये इस अगर इलाके की बात करें तो 3 विधानसभा आती है और तीनों अभी फिलहाल कांग्रेस के साथ है। और यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी, अगर आप देखिए 2008 के दौरान जो सबसे ज्यादा सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसमें पहला जो धमाका हुआ था ये इसी हनुमान मंदिर में हुआ था और इसके बाद यहाँ पर 3 से 4 जो धमाके लगातार जो हुए थे वो ये थे छोटी चौपड़ में, त्रिपोलिया में बम धमाके भी हुए थे। तो जो प्रधानमंत्री मोदी का जो ये पूरा रोड शो है ये इन्हीं इलाके से है। संगानेरी गेट से शुरू होकर बापू बाजार जा रहे हैं, नेहरू बाजार, किशनपॉल बाजार है, छोटी चौपर है, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपर होते हुए जोहरी बाजार आएंगे। तो पूरा जो मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर अगर देखिए तो बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी बहुत मजबूती से यहाँ पर लड़ रही है। 2 उम्मीदवार कांग्रेस के जो है मुस्लिम भी है, तो आप कह सकते हैं कि बहुत सेंसिटिव इलाका भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो यहाँ पर कर रहे हैं और जबरदस्त उत्साह जो है आपको लोगों में देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे नरेंद्र मोदी का और यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी आए तो जबरदस्त उत्साह के साथ सबको अब जो यहाँ पर ये संगानेरी गेट ही है, यहाँ से शुरुआत हुई थी, पूरे घूम के करीब 4 किलोमीटर का जो एरिया है वो घूम के फिर वापस यहीं पर आएंगे और यहीं पर हनुमान मंदिर में पूजा होगी, जहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। आज मंगलवार का दिन भी है, हनुमान जी के दर्शन होंगे और वहाँ पर पूजा अर्चना करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ जरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बारे में भी बताइए। इट मस्ट बी अ सिक्योरिटी नाइटमेयर बिकॉज देयर आर लिटरली लैक्स ऑफ पीपल। अमित, आपके पीछे अभी भी दिख रहे हैं।
जी हाँ, बहुत जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एसपीजी सिक्योरिटी कवरेज में वो आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो पूरा बैरिकेड करके लोगों को उस पार रखा गया है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहाँ जो राजस्थान पुलिस है, जयपुर पुलिस है, वो भी है। इसके अलावा जो स्पेशल कमांडोज है वो भी पूरे जो छत का है, इस पूरे इलाके में अगर आप देखिए, क्योंकि पतली सड़क जो है उसके दोनों तरफ जो घर है उनके छतों को खाली रखा गया है। आमतौर पर रोड शो के दौरान वहां पर लोग चढ़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी ऊपर जाने नहीं दिया गया है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं, और हर बिल्डिंग के ऊपर पुलिस के जो कमांडोज हैं उन्हें तैनात किया गया है। तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बीच प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर, क्योंकि सेंसिटिव इलाका है तो सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है वो तमाम यहाँ पर लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं अब नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जो पूरा चक्कर लगाकर आने वाले 4 किलोमीटर का यहाँ पर नरेंद्र मोदी अभी पहुंचेंगे थोड़ी देर में, इसी रास्ते से आने वाले हैं। तो तमाम लोग अब इंतजार कर रहे हैं आप लोग नरेंद्र मोदी का। हाँ जी, इंतजार कर रहे हैं। क्या कैसे स्वागत करने वाले हैं प्रधानमंत्री? जय श्री राम बोल के, जय श्री राम बोल के, जय श्री राम बोल के। तो कितनी देर से वेट कर रहे थे आप? Warm welcome, and the enthusiasm is not ebbing despite the fact that they've been queuing up on the roads for hours now just to catch a glimpse of the Prime Minister. But what does this mean for the BJP on the ground to have the Prime Minister helming their campaign? Well, we'll find out very soon, won't we? Thank you so much, Amit, as well as Gajraj. With that, a short break.